फिर existence of information system which fails by design or accident to provide sufficient evidence. Existence of information system which fails by design or accident to provide sufficient evidence. लास्ट पॉइंट इज एडवर्स मीडिया कमेंट. अगर मीडिया में कुछ नेगेटिव कमेंट आया है तो दैट इज ऑल्सो चांस ऑफ नॉन देन देयर इज ऑल्सो चांस ऑफ नॉन कंप्लायंस. नाउ second last topic is audit procedures to be followed when non-compliance is identified or suspected. अब अगर मेरे को पता चल गया कि नॉन कंप्लायंस है या फिर मेरे को शक है कि नॉन कंप्लायंस है तो फिर कैसा ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ करना चाहिए. If auditor has information about non-compliance, he shall obtain understanding of nature of act and circumstances in which it has occurred and further information to evaluate the possible effects on financial statement. पहला हो गया understanding of nature of act and circumstances in which it has occurred and further information to evaluate the possible effect on financial statement. ठीक है, फर्स्ट हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इन विच इट हैज़ अकर्ड एंड फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Second point is, if auditor suspects non-compliance, he shall discuss the matter with management. If they do not provide sufficient information and effect of non-compliance may be material to financial statement, then auditor shall consider to legal advice. पहला हो गया कि उसको ऑडिटर सस्पेक्ट किए हैं नॉन कंप्लायंस तो पहले मैटर को डिस्कस करो मैनेजमेंट से. अगर वो कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो फिर लीगल एडवाइस लें. लास्ट पॉइंट, if sufficient information about suspected non-compliance cannot be obtained, auditor shall evaluate effect on auditor's opinion. अगर sufficient information नहीं मिलता है about suspected non-compliance तो ऑडिटर को अपना ओपिनियन को इवेलुएट करना होगा कि उस मतलब इस नॉन कंप्लायंस की वजह से उसके ओपिनियन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है. लास्ट टॉपिक, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर for non-compliance of laws and regulation in audit of financial statement. Reporting of identified or suspected non-compliance. Topic is reporting non-compliance to TCWG.